So we have completed primary ionization process. और प्राइमरी आयोनाइजेशन प्रोसेस के अंदर दो प्रोसेस मैंने बताए थे. व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोसेस? व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोसेस? Ionization by collision. या प्राइमरी में है, एक तो था अपना आयनाइजेशन बाय कोलिजन एंड सेकंड वन इज फोटो आयनाइजेशन. आयनाइजेशन बाय कोलिजन और सेकंड वन वाज फोटो आयनाइजेशन. फोटो आयनाइजेशन. ओके, so the next phenomenon is secondary ionization. Secondary ionization. So let's discuss secondary ionization. Secondary ionization. So let's have a very simple definition for secondary ionization. What is secondary ionization? Anybody want to try what is secondary ionization? Okay, by the simple definition, the formation of secondary electrons are generally known as secondary ionization. It is a very simple. It's very simple. Formation of secondary electrons. Formation of secondary electrons are generally known as secondary ionization. Okay, so the formation of secondary electrons are referred as secondary ionization. So let me ask you a question: how secondary electrons are formed? How secondary electrons are formed? अभी जैसे अपन ने प्राइमरी आयनाइजेशन प्रोसेस के अंदर देखा था ना कि उसके अंदर भी एक गैसियस एटम फॉर्म हो रहा था और एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा था. इसके अंदर क्या है कि एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी फॉर्म होंगे साथ में. कैसे होंगे? हाउ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म? सी द प्रोसेस इज सेम. Like our primary ionization, the process is same. Let's consider two electrodes. One is cathode, another one is anode. ये cathode हो गया, this is anode. Cathode is having negative charge, anode is having positive charge. Let's have a setup of cathode and anode, and these two electrodes in between, in these two electrodes in between, you are going to fill the gaseous dielectric material. This is a gaseous dielectric material. Then what you are going to apply? You are gonna apply a high voltage across it, right? So whenever you are applying high voltage, what happens? If you are applying high voltage? Anybody? Whenever you are applying high voltage, what happens? A small amount of electrons will be generating. A small amount of electrons are generating. So these electrons will be colliding with a gas molecule. This gas molecule A, electrons will gonna collide with this gas molecule. Then when the electrons will collide, as a result, further electrons will generate. So these are the different electrons generating at this medium. And apart from this, positive ions will be generated. Positive ions, this A plus positive ions will be generated. Whether this fact is true or not. Tell me whether this fact is true or not. If we are applying this, ये हो गया अपना. These secondary electrons are generating. साथ में क्या होगा? Positive ions are also be generated. Positive ions. So whether this fact is true or not, positive ions are generating or not. Is it 100% correct? बताइए, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है मेरी क्लास? कोई क्लास में है प्रेजेंट? बताओ यार, ये बताओ कि पॉजिटिव आयंस होंगे कि नहीं होंगे, रिलीज होंगे कि नहीं होंगे भाई? दैट इज 100% ट्रू. Okay, it is correct that the electrons that will be colliding with the gaseous atom. As a result, there are further electrons. As a result,
there are further electrons. Further electrons will be generating inside the gaseous medium. Apart from that, one positive ion will also be generating. Okay. So these electrons that will be responsible for the conduction in the gaseous medium. It is correct that the electrons will be colliding with the gaseous atom, and as a result, further electrons will be generating inside the gaseous medium. Apart from that, one positive ion will also be generating, and this electron this electron that will be responsible for the conduction in the gaseous medium. So there will be a minute amount of current. There will be a minute amount of current that will be formulating inside the gaseous medium. Right? There will be a minute amount of current that will be formulating inside the gaseous medium. And this process is known as ionization by collision that we have already discussed just before. Ionization by collision. Provided there will be one condition. What was the condition? What was the condition? एप्सिलॉन वाली कोई कंडीशन बताई थी? पुराने नोट्स लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो आप लोग? क्या कंडीशन थी? If there is a very minute amount of current is formulating inside the gaseous medium, that process is known as ionization by collision. So अभी ये अपना पहले डिस्कस हो चुका था ionization by collision, but there was a very important condition was there. क्या condition थी वो? कि जो epsilon था अपना, epsilon should be greater than the ionization potential. This epsilon should be greater than the ionization potential. याद आ रहा है? हाँ सर, ये लिखना सर लिखा नहीं था ये अपन ने। अभी लिख लो है ना, epsilon should be greater than ionization potential. So collision क्या energy gained during collision that should be greater than the ionization potential. लिख लो ये वाला point, energy gained during collision, energy gained during collision that should be during collision that should be greater than ionization potential. Okay, so फिर उसके बाद सिंपल प्रोसेस है, सेकेंडरी आयोनाइजेशन का एकदम सिंपल प्रोसेस है. वी ऑल नो दैट द चार्ज ऑफ द कैथोड इज नेगेटिव. We all know the charge of the cathode is negative and the charge of the polarity of the anode will be positive. The charge of the cathode is negative. इसका anode का polarity जो रहेगा that will be positive and electrons will be moving towards anode or cathode. Electrons will be moving towards anode. Why? Because The positive charge. Okay, this is very simple, है ना? This is very simple. Why? Because different polarities having different sign. Sign is actually different here. Unlike charges attracts like charges. Unlike charges will attract each other. Unlike charges attracts. Okay, and like charges will repel each other. This is the principle. You all know that like charges repels each other here. Like charges repels. Okay, this is the principle of attraction. Principle of attraction. It's the principle of attraction. Yeah, attraction. Okay, obviously it always. Look at this cathode side. Look at this cathode side. Positive ions. This positive ions. What happens? What happens? These positive ions will be moving towards cathode. These positive ions will be moving towards cathode, and the positive ions will be moving towards cathode. When this positive ions, whenever this positive ions is bombarding,
whenever the positive ions is bombarding with cathode, as a result, what will happen? As a result, what is going to happen if the positive ions are bombarding with cathode? If the positive ions are bombarding towards cathode, what will happen? This is the whole process. This is the whole process. Secondary electrons will be generating. Important. Secondary electrons will be generating. Secondary electrons will be generating. So this is a way how secondary electrons are formed with the process of attraction. So this is the secondary ionization process. So as a result of ionization by collision, positive ions as well as the negative ions will be generating. As a result of ionization by collision, positive ions as well as these negative electrons will be generating, and these electrons will be moving towards anode. These electrons will be moving towards anode, where anode is positive, and this positive ion is directed towards cathode. Apart from that, this will be directly colliding through a cathode, and as a result, secondary electrons will be generating. ध्यान रखना है ये चीज. Colliding, if the positive ions is directed towards cathode, apart from this, the apart from that, this will be a directly colliding through cathode. So as a result, secondary electrons are generated. So these secondary electrons are responsible for the breakdown of the gases. These secondary electrons, they are responsible for breakdown of gaseous medium. So once the secondary electrons are formulated, what does it mean? Once the secondary electrons are formatted, what does it mean? It means the entire breakdown of the gaseous medium is going to take place. Entire breakdown of the gaseous medium is going to take place. So this phenomenon is known as secondary ionization. This phenomenon is known as secondary ionization. They are responsible for the breakdown of the gases, and once the secondary electrons are formulated, it means the breakdown of the gaseous medium, entire breakdown of the gaseous medium is going to take place. लिखवा दोगे ये चीज? The secondary electrons, they are responsible for the breakdown of the gaseous medium, and once this secondary electrons are formulated, entire gaseous medium में क्या होगा भाई? ब्रेकडाउन हो जाएगा. Okay, breakdown will take place in the entire gaseous medium, and this phenomenon is collectively known as secondary ionization. लिख लिया? लिख लिया? आगे बढ़े? Yes. So अभी प्राइमरी आयोनाइजेशन हो गया अपना, सेकेंडरी आयोनाइजेशन हो गया. उसके बाद फिर अपन को टाउनसेंड्स क्राइटेरिया अपन को करने हैं. टाउनसेंड्स क्राइटेरिया ऑफ आयोनाइजेशन. अच्छा, उससे पहले आप मेरे को थोड़ा सा ये बताओ कि बहुत सारे टाइप सेकेंडरी आयोनाइजेशन के एग्जांपल बताओ. देयर आर different types of secondary ionization present in the
अब मार्केट तो नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट इन दी हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग और एनी ऑफ द रिसर्च लेबोरेटरी। तो बताओ कौन कौन से होते हैं? There are different types of secondary ionization present. So what are they? अपन को तो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी आयनाइजेशन पढ़ना है, और बाकी में जो मैंने बताया था तुम लोगों को टाउनसेंड्स वाले क्राइटेरिया और उसका कौन कौन से बताए थे, ध्यान करवाओ जरा, वापस से बोलो। स्टीमर थ्योरी वगैरह ध्यान आ रहा है? मैंने बोला था ऐसा, स्टीमर थ्योरी हो गया है, उसको एवलांचे ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज, पार्शन्स लॉ, पार्शन्स थ्योरी। And spectral type of breakdown in electronegative process. Electronegative gases, okay, हाँ, these are the different types of phenomena which are related to gaseous dielectric breakdown. Now अभी आप मेरे को थोड़ा सा ये बताओ कि सेकेंडरी आयोनाइजेशन को अगर पता हो तो बता सकते हैं, है ना? सेकेंडरी आयोनाइजेशन प्रोसेस और भी टाइप्स की उसके एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने सुने भी होंगे वो, पर अभी अपन को इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या हाई वोल्टेज सब्जेक्ट में अपन को उसको पढ़ना नहीं है, मतलब वो डेप्थ में हो जाता है बहुत ज्यादा, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ द examples which are related to our topics, although we are not studying our that examples further, but we should be aware of the examples. First one is electron emission. Electron emission due to positive ions impact. Electron emission due to positive ion impact. सुना होगा तुमने, this is a type of secondary ionization process. This is an example for secondary ionization process. It is a type. Second one is electron emission due to photons. Electron emission due to photons. These are the sub classification of secondary ionization. एक और है यहाँ पर, बताता हूँ मैं. इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू मेटा स्टेबल एंड न्यूट्रल भी कर लो इसको, न्यूट्रल एटम्स. लिख लेना ये टाइप भी, electron emission due to metastable and neutral atoms. So these are the sub classifications of the secondary ionization process. So we have completed the primary ionization process. Primary ionization के अंदर अपन ने दो सब कैटेगरीज उसकी डिस्कस कर ली. that was ionization by collision, और एक था अपना दूसरा कौन सा था, photo ionization. Second one was photo ionization. What do you mean by photon? Basically it means light. So in photo ionization what we are अपन क्या कर रहे थे photo ionization के अंदर? What you are doing in photo ionization, you are actually applying high voltage source in order to measure high current. Okay, so and also we are using a current limiter. Current limiter also we are using to protect the entire circuit. So if we are applying high voltage source, and in order to measure high current, we are using ammeter, and to protect the entire circuit we were using current limiter. और मीडियम ऑफ द मीडियम क्या था, जो गैसियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम था उसमें अपन कुछ भी, एयर हो गया अपना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, वैक्यूम हो गया, एनी टाइप ऑफ गैस दैट इज डाइलेक्ट्रिक. और जो यूवी रेडिएशंस थी वो एक्सटर्नली अपन लोगों ने पास ऑन करी थी. एंड व्हेन यू आर पासिंग यूवी रेडिएशन एक्सटर्नली, what happens, there will be a generation of a small amount of current, and this small amount of current in that region of the gaseous atom, if you are passing the UV radiation, as a result a small amount of current is obtained. तो वो क्या कर रहा था, स्पॉइल कर रहा था प्रॉपर्टी गैसियस मीडियम की, तो उसको डाइलेक्ट्रिक. तो ध्यान आ रहा है, ये हुआ था अपना, ये बताया था मैंने तुम लोगों को प्राइमरी आयोनाइजेशन के अंदर. सेकेंडरी Yes. भी करा अपने सेकेंडरी आयोनाइजेशन, उसमें भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन.
फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ये भी मैंने शुरुआत में डेफिनेशन तुम लोगों को बता दी थी. दिस वाज द सिंपल डेफिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी आयोनाइजेशन? इट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. Formation of secondary electrons are generally known as secondary ionization. Formation of secondary electrons are referred as secondary ionization. और इसमें अपन ने कौन सा जो एकदम सिंपल वाला लॉ था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो चार्जेस के केस के अंदर है ना, चार्जेस के केस के अंदर उसके थ्रू सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस अपन ने अभी पूरा डिस्कस कर लिया, राइट. देन उसके बाद कंक्लूड कर रहे हैं अपन, है ना, आयनाइजेशन प्रोसेस कंक्लूड कर रहे हैं. प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, फिर सेकेंडरी आयनाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स भी अपन ने देख लिए. इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू पॉजिटिव आयन इंपैक्ट हो गया, है ना, फोटॉन्स हो गया, मेटा स्टेबल एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू पॉजिटिव आयंस एंड क्या था, इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू न्यूट्रल एटम्स, मेटा स्टेबल एंड न्यूट्रल एटम्स. सो दिस आर द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी आयनाइजेशन. एंड अभी यहाँ पर अपना आयनाइजेशन प्रोसेस प्राइमरी और सेकेंडरी वाला तो खत्म हो गया. अभी लेट्स मूव ऑन टू द टाउनसेंस क्राइटेरिया फॉर आयनाइजेशन. तो टाउनसेंस के दो क्राइटेरिया थे प्राइमरी, टाउनसेंस फर्स्ट आयनाइजेशन क्राइटेरिया, टाउनसेंस सेकेंड आयनाइजेशन क्राइटेरिया. तो उसको देखते हैं अपन.